improved, and there is no plan to discharge. For these there's no prior to course of the disease was complicated in the form of reduced appetite, some vision issues, and dry skin, rashes over the body, and some gait disturbances, but was not associated with any alopecia, joint pain, poor school performance, any prolonged fever, generalized body swelling, worsening handwriting, or the any previous blood transfusion or a prolonged IV medication use, but or any ATT medication, history of any ATT medications or Hakim medications intake. Also, there is no any history of fits, hypoglycemic episodes in the early life, or recurrent chest infection and prolonged diarrhea, or any fruit juice intake. Activity of the daily life was significantly affected in the form of missed school days and unable to walk due to the gross sights. Um, she is third issue, born dumb, and there is no history of any prolonged jaundice. And she is vaccinated up to date, and developmentally she is normal according to her age. She used to do all her homework, houseworks, and also used to go to school. But during the course of disease, this has impaired. She lives in a rented house, consists of 2 rooms with separate washroom. Source of water is hand pump. There is no any history of chronic illness in the family, like tuberculosis or any liver disease, or diabetes mellitus and hypertension. Uh, uh, Disease has significantly impacted the family and the child. The disease has significantly impacted the child and family. And the mother is really worried the regarding the gross distension and of the child. Family has poor knowledge regarding the disease, and also there was no any family screening has done till today. My patient Fazila, 10-year-old, who was conscious and cooperative during my examination, well oriented to time, place, in person, with no any unusual features, with following vitals in blood pressure of the 100/70, temperature was 98 Fahrenheit, pulse was 120 breaths per minute, and respiratory rate was 20 breaths per minute, and height was 115 centimeter, and weight was 25 kg, uh, which I want to plot on the centile chart. There is palmar erythema, cholinekia, and clubbing of grade 2 was positive, while there was no any lymphadenopathy, any BCG scar was present, and there was no any spider nevi gynecomastia. Uh, on abdominal examination, abdomen was soft, distended, with slit-like umbilicus with prominent veins around the abdomen. Flow of the veins was away from the umbilicus, and there was a liver palpable about 5 centimeter below the right costal margin, and total span of the liver was 10 centimeter. Liver was firm in consistency with irregular margins, and texture of the liver was smooth. It was moving with the respiration, and spleen was also palpable about 5 centimeter below the left costal margin. That was firm in consistency with no splenic notch palpable, and bladder, kidneys was not palpable, and there was free fluid in the abdominal cavity in the form of positive fluid thrill and shifting dullness. Genitals were pre-pubertal, and there was slight prick marks over the abdomen, and due of the ascitic tape, and also there was bandage applied. Hernial orifices were intact, and the CNS examination gate was disturbed due to the gross distension. GCS was 15/15. Tone, power, and reflexes were normal, and there was no any uh, uh, there was no any sacral or pedal edema present. Chest CVS examination was unremarkable. While I would like to complete my examination by doing the slit lamp examination and the joint examination of the child. Okay. Anything else you want to do? No, ma'am. Okay. Would you like to do the rectal examination of your patient? Yes, ma'am. Okay. What is examination of the back of your patient?
Ma'am, back of examination was normal, but there was sacral edema positive. That was present. Okay. Hmm. Hmm. All right. So, what is your diagnosis? Ma'am, my diagnosis is chronic liver disease with complications of portal hypertension. Okay. So, what about the nutritional? What are the total calories he has taken? She has taken 24 hours before. Ma'am, she has taken 1200 calories during the 24-hour period, but during the means according to her age, these are means deficient. Would you like to do the bedside BSR checking of your patient? Yes, ma'am. Okay, why? Because ma'am, in the chronic liver disease, there is disturbance in the synthetic functions of the liver, so the blood sugar can be low. Okay, what is the severity of the yellowish discoloration of your patient? Ma'am, that was like it was it was limited to face only. It was limited to the face only. Okay. Hmm. What was the color of the urine and what was the color of the stool of your patient? Ma'am, the color of urine was high and there was pale stool. Okay. What was the severity of the abdominal distension? Ma'am, it was gross ascites and there was also prominent veins and literal and shifting dullness both were positive, and also there was abdominal wall edema, like when I was pressing Okay. with the finger of the finger, then and that leaves an impression. Was that severe or not? Yes, ma'am, that is severe. Okay. What are the features which are in favor of severe abdominal distension in your patient? Ma'am, prominence of veins around the umbilicus and Okay. gross and literal and shifting dullness positive, abdominal wall edema and splenomegaly. Okay. Was there any pleural effusion in your patient? No, ma'am. Okay. Is your patient hypovolemic or normovolemic? When, when he was landed in the hospital, he was like drowsy because of the bleeding When we episode. examined the patient, was that hypovolemic or normovolemic? Ma'am, he was normovolemic. Now, what are the features which are in favor of normovolemia in your patient? No, ma'am, he was his GCS was 15 by 15. There Okay. was normal pulse, and the CRT was also not delayed, and there was no any signs of dehydration like skin pinch goes back very slowly or sunken eyes. Why you asked for the fruit juice intake in your patient? What was the significance of that? Ma'am, I was just as a part of means I was suspecting that there may be the fructose intolerance. So you are suspecting fructose intolerance in a 10-year-old child? No, ma'am, I was asking in the early age life, in when while she was born or while she had Okay. started her complementary feeding. Is this the first episode of yellowish discoloration or that is a chronic phase? No, ma'am, this is the first episode, and that occurred 3 months back. 3 months back. So are you suspecting this fructose intolerance in your patient who just presented at the age of 10 years? No, ma'am. Okay, all right. So why endoscopy of your patient was done? Ma'am, it was done because patient bleed on presentation. So it was therapeutic endoscopy or was that diagnostic endoscopy? Ma'am, it was diagnostic as well as therapeutic. Okay, what diagnosis was made on the basis of this endoscopy? When there was the means varices, esophageal varices were present in the lower third of the esophagus. Okay, what treatment was given by this endoscopy? Ma'am, there is balloon dilation, Was done sagittal. in your patient? Balloon Uh, what was done in your patient? Ma'am, it was means they had via sclerotherapy or via No, no. sagistal. What was done in your patient? We know that is things taken tube and sometimes balloon dilatation is done. What procedure was performed in this very specific patient? Ma'am, they were saying that while endoscopy, we have it means connected some veins around. What patient told me. Okay. So what was the report of 24-hour urinary collection?
Ma'am, that is still awaited. That has not come. Okay, was any medication was given before collection of this urine sample? Yes, ma'am. Okay, did you ask for that? Yes, ma'am. Okay, so what are the lab reports of your patient? Ma'am, patient don't know regarding the reports, but while I have patient was just known that he has decreased blood and there is a much loss of blood, and his liver functions are deranged. That's why FFP and blood transfusion was done. Okay, anytime this patient, why you ask for the rash in your patient? Ma'am, as these patients are prone to the micronutrient deficiency, so I was suspecting that there may be the bruise or Okay, petech. okay. Was any time ultrasound of abdomen done? Yes, ma'am. What was the report for that? And ma'am, they were saying that then there is a hepatosplenomegaly. Hepatosplenomegaly. Okay, all right. So your diagnosis is, what is your diagnosis? Chronic liver Ma'am, disease? my chronic liver disease with portal hypertension. Okay, chronic liver disease with portal hypertension. Is this chronic liver disease or is this portal hypertension? Ma'am, it is chronic liver disease with portal hypertension. Okay, so what is, please decide. These are two different things. That is chronic Yes, liver ma'am. disease or portal hypertension. What Ma'am, is the ma'am, duration of disease of your patient? ma'am, total 4 months. Sorry. Okay. So Ma'am, is that, total, sorry? ma'am, total 4 months duration of the disease. You told us yellowish discoloration that was 3 months before, and this episode of, 1 month. okay. So is that 4 months duration or 3 months duration? Ma'am, 3 months. Sorry. Okay. So is that chronic liver disease? Yes, ma'am. What is duration for the chronic liver disease? Ma'am, it is written that though the means duration of the liver disease should be greater than 3 months, but if there are presence of the stigmata of the chronic liver disease on presentation, then you can say that it is a chronic liver disease. Okay. So is this is chronic liver disease with portal Yes, hypertension? yes, ma'am. Okay. What are the features in favor of chronic liver disease in your patient? Ma'am, there was clubbing positive, palmaradremia was positive, Mhm. cholinekia was positive, and there was hepatosplenomegaly, and also there was signs of micronutrient deficiency, Okay. and uh, Which micronutrient deficiency you have seen in your patient? ma'am, vitamin K, because bruise and petechia I have seen, and there was also vitamin D deficiency in the form of uh, bony. Uh, Means there was signs of vitamin D deficiency in the form of rickety rosary over the chest, and also there was chelosis and dry skin. Okay. Do you have osteomalacia in a 10-year-old child or rickety rosary in a 10-year-old child due to vitamin D deficiency? Ma'am, there was means from her chest was like bones were prominent, and their shape was like rickety rosary. Was there costochondral junction prominence or not? Costochondral. Yes, ma'am, there was. Okay. Did you feel it like BD appearance of these costochondral junctions? Ma'am, not prominent like in the means 5 year or 4 year child, but I was thinking like that. Okay. What is the difference clinical in this portal hypertension and chronic liver disease? Ma'am, in the portal hypertension, there will be the ascites and splenomegaly and prominence of veins, while if there it is a chronic liver disease or chronic liver disease with portal hypertension, then presence of jaundice should be there. In portal hypertension, you will have jaundice. No, ma'am, in the chronic liver disease. Okay. So is this chronic liver disease or portal hypertension? Ma'am, they both means chronic liver disease with complications of portal hypertension. Okay. We do have some hepatic causes of portal hypertension. Yes, ma'am.
Can this hematemesis be due to some clotting factors deficiencies which are a part of this chronic liver disease? Um, ma'am, due to the loss of clotting factors, no, ma'am, I don't think so. Okay. So, what are the features, clinical features of the liver clinical examination which are in favor of chronic liver disease? Uh, Ma'am, liver was firm in consistency, Okay. and there was the total liver span was not that much. Decreased. It's not decreased, it's increased. Uh, yes, ma'am. Okay. And there is a splenomegaly positive. What was the surface of the liver? Ma'am, that was firm. Surface was smooth, while Smooth. consistency was firm. Okay. So, what clinical was the left lobe of liver palpable? And left lobe of liver, no, ma'am. Did you specifically check for that? Yes, ma'am. Okay, all right. So, what is your differential diagnosis or what is the cause of chronic liver disease in your patient? Ma'am, I was suspecting on the top Wilson's, secondary to the Wilson's disease, on the second autoimmune disease, and on the third drug-induced can be, Okay, or on the fourth can be to the secondary infections like hepatitis B or C. okay. What causes of hepatitis B or C you have ruled out in your history? Ma'am, I have asked regarding the any means ma'am previous blood transfusion or any prolonged IV medication have done. I also asked regarding the ear piercing and tattooing of the child, but they were saying that we have pierced child's ears at home. Any tooth extraction was done any time before these presentations? Ma'am, I don't ask these things. Okay, okay. So, what are the features which are in favor of Wilson disease in your patient? Ma'am, Wilson's disease have wide presentation, and and though she has no any CNS manifestation, but she has liver manifestations in the form of jaundice and abdominal distension. Okay. What features of autoimmune disease you have ruled out in your history? Ma'am, I have asked regarding the joint pain, alopecia, any rashes, and any means any body generalized body swelling or the prolonged fever, which was not remitting. Okay, all right. How will you investigate? Ma'am, first of all, I will review the previous labs. Then I will go for the complete blood count with peripheral smear and retic count and Coombs test. Then I will go for the liver synthetic functions in the form of prothrombin time, anti-prothrombin time, and APTT and INR, uh, and uh, Activated partial thromboplastin time, ऐसे बोलना है. activated partial thromboplastin time, and INR, and also we go for the serum albumin and Okay. serum electrolytes, blood sugar level, serum Mhm. ammonia level, and then I will go for the viral markers like hepatitis B and C, and then I will, according to the my differential diagnosis, I will go for the 24 or urinary copper test, serum celluloplasmin, and the slit lamp examination of the child. And on my second differential is autoimmune disorder, so I will go for the antibodies like anti-neutrophilic antibodies and anti-liver kidney muscle antibodies, anti-smooth muscle antibodies, and anti-liver cytosol antibodies. And also, I will go for the immunoglobulin levels, Very good. and I will, and on my third level, my third differential is uh, my third differential is drug induced. So if I will suspecting any drug intake, so I will do the drug level. And then my fourth differential is hepatitis B and C. So I will go for the qualitative and quantitative PCR. Okay. So you will not go for ultrasound of abdomen. Yes, ma'am. I will also go for the ultrasound abdomen and the endoscopy of the child as he was presented with.
and Why you also the want to go for aside tape also. why you want to go for the Coombs test in your patient? What, ma'am? Why you want to go for Coombs test? Holmes says, as I am suspecting my top differential is Wilson's disease and my second differential is autoimmune. So Coombs test is positive in case of autoimmune and Coombs test is negative in case of Wilson's disease. Okay, all right. So how will you manage your patient? Ma'am, I will do the multidisciplinary approach. First of all, I will confirm my diagnosis and counsel the parents regarding the disease nature and the prognosis of the disease. Then I will take the multidisciplinary approach in which I will involve the myself pediatrician, gastroenterologist, and uh, gastroenterologist, nutritionist, and Hmm. psychosocial social worker, psychosocial support, psychosocial support, and also I will involve the Yes. nephrologist and the Nephrologist. infectious teams, Very good. and Okay. uh, will counsel will start the treatment as my patient has presented with chronic liver disease with portal hypertension. So first of all, I will maintain her hemodynamic stability. I will maintain her airway breathing and circulation, and will stop the source of bleeding. Uh, Okay. I will I will give injection vitamin K and Okay. injection ranitidine and injection injection omeprazole, and I will also transfuse with the FFP as PT and APTT are deranged, and also I will give the water soluble and fat soluble vitamins, and I will decrease the acids with the help of tablet aldactone or tablet spironolactone BD, and um, I will also prescribe. I will as if it founds to be the Wilson's disease, I will give penicillamine. But before giving penicillamine, I will take a CBC. Then I will prescribe that either I should give or not. Okay. And also I will prescribe. Also I will give him some dietary restrictions in case of Wilson's disease. And Mm. Yes. And also will told them regarding the liver transplantation. वेरी गुड. ठीक हो गया. अब ये देखिए आपने अपना केस जो है टोटल जो है 26 मिनट्स में ना आपने टोटली डिस्क्राइब कर दिया है. ओके. So let us talk about what is the prognosis of your patient? Ma'am, prognosis if it found to be the Wilson's disease, Okay. then uh, prognosis is good if the dietary restrictions and the proper compliance is followed. Okay. Any recent advances if it proves to be a case of Wilson disease? Any recent advances? If it proves to be a case of Wilson disease. Then they are saying that the liver transplantation, one is that liver transplantation, second is the if we cannot give the penicillamine, then there are alternatives like zinc acetate and trintrine. ओके समझ गई. ठीक हो गया. शाबाश डॉक्टर चंदा. आपका केस जो है ना लास्ट टाइम भी मुझे याद है बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया था. अभी भी जो है लाइक आप एक अच्छा केस वो होता है जिसमें एग्जामिनर को समझना है कि मैं क्या पूछूं. ठीक हो गया. इन्होंने मुझे हर चीज प्रेजेंट किया. ऑल्दो ये जो केस है लाइक यूजुअली जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है ना वो केस यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते. जो आपको एग्जाम में आते हैं वो क्रोनिसिटी होती है जो कि मल्टीपल टाइम लाइक मे बी 1 साल से भी यहाँ पे आ रहा हो, मे बी 1.5-2 साल से आ रहा हो. जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें यूजुअली डायग्नोसिस अभी बनने होते हैं वो केसेस यूजुअली एग्जाम में नहीं आते. ठीक है.
फिर भी आपने सारे अपने एरियाज को कवर किया है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। जो इसमें जो प्लस पॉइंट है वो तो खैर इसमें ये है कि मुझे कोई बहुत ज्यादा पूछने का या ये क्यों नहीं किया वो, क्योंकि आपने इसको बड़ा ही जो है ना स्मूथली और जो है ना सिस्टमेटिक वे से लेके चली है, ठीक है। तो इसमें येलोइश डिस्कलरेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये भी ठीक हो गया। जो आपने इन्वेस्टिगेशन कराई है, ओके, आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो इंटरप्रिटेशन अगर कोई है तो वो भी आपने डिस्क्राइब करनी कि जैसे एंडोस्कोपी का था तो हमें पता होना चाहिए था कि एंडोस्कोपी क्यों की गई, क्या उसने स्क्लेरोथेरेपी की है या बैंड लाइगेशन की है। मुझे इन प्रोसीजर्स का और जो हुआ उनका वो पता होना चाहिए था, ठीक हो गया, कि ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। ओके, उसके बाद था कि 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन है, क्या ये विस्टामिन चैलेंज उसने किया है या वैसे देखें अगर हम वो बात करें कि लाइक विल्सन है उसमें भी प्रोटीन यूरिया चेक करने के लिए हो सकता है, तो उसमें बड़ा ही क्लियर होना चाहिए था कि उसको विस्टामिन चैलेंज टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया, अल्ट्रासाउंड किया है या नहीं किया गया उसका भी पता होना चाहिए था, ठीक हो गया। जो आपकी वो हिस्ट्री थी लाइक एफ बाइंड्स वाली फैमिली, बर्थ हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, न्यूट्रिशन हिस्ट्री, वो भी थोड़ी सी जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप उसको एक ही दफा कर लेना, फिर आपने सोशल इकोनॉमिक को एंड पे बताया, पहले बाकी बातें बता दी, फिर सोशल इम्पैक्ट को एंड पे बताया। तो आप उसका एक मतलब कोई फार्मूला जैसे मैंने एफ बाइंड्स रखा है ना, फैमिली, बर्थ, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो सारी एक में आ जाए, आप उनकी डिस्क्रिप्शन एक दफा ही दे दें, ठीक हो गया। ये सारा भी बिल्कुल ठीक था, ओके। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन भी आपने बहुत अच्छा बड़ा ही सिस्टमैटिक वे से, डॉक्टर उमैर प्लीज वो देखें ना, उन्होंने पहले ओपनिंग सेंटेंस दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने वाइटल्स दिए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ओके, यहाँ पे आपको ये कहना चाहिए था कि लाइक देयर आर peripheral stigmata of the chronic liver disease are positive in the form of this and this, ठीक है। तो पता चलता है कि आप सीएलडी को रूल आउट कर रही हैं, ओके। जॉन्डिस का मुझे नहीं पता चला कि आपने जॉन्डिस के ऊपर कमेंट किया है या नहीं किया, क्योंकि जब भी आपने जॉन्डिस का कहना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, आपने वहां पे ये लफ्ज लाजमी कहना है, आई वुड लाइक टू चेक इट इन द सनलाइट, ठीक है। और abdominal examination especially in this case I would like to do the per rectal examination of this patient, ठीक है। अगर इसको हेमेटोमेसिस है तो इसको मलीना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर रेक्टल तो इसके अंदर मस्त था। बैक ऑफ एग्जामिनेशन में अगर एडीमा है तो पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, ड्यू टू एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी है या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, वो आप इसको लाजमी इलेबोरेट करना है, दैट वाज पिटिंग एडीमा, ठीक है। जहाँ पे आपने हार्वे मेथड का भी बताया, फ्लो ऑफ वेन्स भी बताया, दैट वाज वेरी गुड, ओके। इसके बाद ओमिप्राजोल आपने नाम नहीं लेना, ठीक है। हाँ, कौन सी ड्रग होती है बोला इसके अंदर, इसके अंदर में ओमिप्राजोल आपने नाम क्यों लिया था? मैम वो तो मैनेजमेंट में लिया था ना, यहाँ पे तो नहीं लिया था। अच्छा, मैनेजमेंट में आपने कल एक ने वो पेनाडोल का भी नाम लिया था, तो पेनाडोल नहीं पैरासीटामोल जो है ना, आपने उनके जो है ना जेनेरिक नेम लेने हैं, ट्रेड नेम्स नहीं लेने, ठीक है। ये वो मेरे माइंड में इसको किया था। एसएमआर का भी आपने बताया, वेरी गुड, ओके। स्लिट लैम्प का भी बताया, शाबाश, सारी चीजें आपने ठीक की, ओके। नाउ लेट्स कम टू योर वाइवा, सीएलडी विद पोर्टल हाइपरटेंशन। सीएलडी डिफरेंट मोडेलिटी है, पोर्टल हाइपरटेंशन डिफरेंट है, क्यों? पोर्टल हाइपरटेंशन हिपैटिक कॉजेज, प्री हिपैटिक कॉजेज और पोस्ट हिपैटिक कॉजेज, ऐसा ही है ना। क्रोनिक लिवर डिजीज की बात करें तो वो हिपैटिक कॉज है, या तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन है जिसकी कॉज हिपैटिक है, या ये सीएलडी है, ठीक है। सीएलडी के साथ पोर्टल हाइपर, देखिए सीएलडी के साथ ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ना, क्यों? जब आपका जॉन्डिस आ जाता है वो डिसाइड कर देता है कि दिस इज क्रोनिक लिवर डिजीज, आपके सारे यही फीचर्स हो, लाइक असाइटिस है, स्प्लीन बड़ी है, लिवर छोटा है, असाइटिस ज्यादा है और हेमेटोमेसिस हो रहा है, देन दिस इज पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन आप इसको सिंपल कहते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज, ओके। इसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाई हेमेटोमेसिस इज प्रेजेंट, दैट मे बी ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ दिस पोर्टल वेन, ठीक है। फिर वो आ जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉज क्या है, हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है या प्री हिपैटिक है।
तो आपके पेशेंट में क्या थी? हिपैटिक कॉज थी। हेपेटिक हिपैटिक कॉज को फेवर क्या चीज कर रही है? इसका जो लिवर है वो क्रोनिसिटी वाला नहीं है। अभी अभी 3 महीने हुए ना, अभी क्रोनिसिटी वाला नहीं है, बट मे बी द इनिशियल सिम्टम्स जो वैसे ही हो। क्यों? क्रोनिसिटी का लिवर जो होता है वो छोटा होता है। प्रेजेंस ऑफ द जॉन्डिस एंड क्लबिंग, दे आर फेवरिंग क्रोनिक लिवर डिजीज, नॉट द पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, आप इसको सिंपल रखें, दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। एग्जामिनर खुद पूछेगा कि हेमेटोमेसिस क्यों हुआ। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, जहां कहीं पे भी दुनिया में, जहां कहीं पे भी है, ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज की जो पहली कॉज है दैट इज इन्फेक्शन। इट्स नॉट विल्सन ऑन द टॉप। पहली कॉज हेपेटाइटिस बी और सी ही है, 5 साल से या बड़े बच्चे में, 4 साल से बड़े बच्चे में। जो बच्चा न्यू बॉर्न है, जो बच्चा फ्यू मंथ्स का है, चाहे वो मुझे गैलेक्टोसीमिया नजर आ रहा है, लेकिन मेरा जो फर्स्ट डिफरेंशियल जिसको मैंने रूल आउट करना है दैट इज इन्फेक्शन। विच इन्फेक्शन? दैट मे बी टॉर्च इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन की कॉजेज को हमेशा टॉप पे रखना होता है। इसमें हेपेटाइटिस बी सी को मैंने पहले रखना है, क्यों? दैट इज मोर कॉमन। विल्सन ज्यादा कॉमन है या बी सी कॉमन है? बी सी ज्यादा कॉमन। ठीक है, फिर उसके बाद आप विल्सन कह सकते हैं सेकंड नंबर पे। वाई? विल्सन इज ट्रीटेबल। उसको मैंने सेकंड पे रखना है। 10 साल का बच्चा है, उसको मैं दूंगी तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। फिर आपकी ऑटोइम्यूनिटी और फिर आपका ड्रग इंड्यूस्ड आना चाहिए था। ठीक हो गया? ओके, बाकी आपने माशाल्लाह बेटा हर चीज़ को कवर किया, मुझे कुछ बताने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको, आप लोग आपस में भी अगर दो दो का ग्रुप बन जाए ना, तो एक दूसरे को भी केस प्रेजेंट किया करें। एक तो आप मुझे कर रहे हैं, एक एक दूसरे को भी प्रेजेंट करेंगे, तो जितनी ज़्यादा इस महीने आपकी प्रेजेंटेशन एक दूसरे को प्रेजेंट करना, स्पीकअप हो जाएगा ना जितना, उतनी आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक हो गया? मैम इसमें जो ये वाइल हम इसमें रखते हैं, जैसे ना हमारे पास कोई बच्चा हमारा क्रॉनिक लिवर डिजीज वाला है और जैसे लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे है और उसको पहले एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं था और अभी एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसने डेवलप किया है, तो फिर इसमें हम ना डीडीज कैसे बनाएं? लाइक जो हम एचओपीसी रख रहे हैं तो उसमें हमें उसकी डीडीज बनानी पड़ती है। तो हमारा एक तो डिफरेंशियल ये हो जाता है कि मीन्स ना बच्चे ने ना स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस डेवलप की है। सेकंड हमारा ये हो जाता है कि मीन्स ना इधर बच्चा जो है ना हेपेटिक इंकेफ्लोपैथी में चला गया है, कॉन्स्टिपेशन या पेरिटोनाइटिस की वजह से उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो रहा है। तो इस हिसाब से मीन्स ना जॉन्डिस हो या मीन कोई भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें हमें ना डीडीज बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो वो डीडीज कैसे बनाए? नहीं, डीडी जो है ना, देखिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन है ना, ये इसकी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है। जहाँ पे कहीं पे भी क्रोनिक लिवर डिजीज है ना, उसकी डिफरेंशियल एब्डोमिनल डिस्टेंशन का नहीं बनेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, जॉन्डिस हो गया, कॉज हुई है, वहां पे आपने विल्सन, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बी सी, ड्रग इंड्यूस, इन्हीं को ऊपर नीचे करते रहना। ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसके डिफरेंशियल हमेशा उसके कॉजेज होते हैं। ठीक है, सीआरएफ की कॉज स्टोन फॉर्मेशन है, रिकरेंट यूटीआई है या पायलोनेफ्राइटिस है। तो इन्हीं चीजों को आपने अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपने ऊपर नीचे करना है। ठीक है, इसी तरह क्रोनिक लिवर डिजीज का भी जो डिफरेंशियल होता है वो हमेशा कॉज को फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, तो मीन्स मैम अब लाइक मीन्स ना कुछ कह रहे थे कि मीन्स ये बर्ड चेरी भी हो सकता है, बट बर्ड चेरी इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें जॉन्डिस है। और ना जो क्रॉनिक बर्ड मीन्स ना क्रॉनिक बर्ड चेरी होता है उसमें मीन्स ना ऐसे जॉन्डिस आता है और वो भी ना उसमें एलएफटी या फिर जॉन्डिस बिल्कुल ना हल्का होता है, और वो जब क्रॉनिक बर्ड चेरी हो जाए तो अब ना एब्डोमेन डिस्टेंशन तो उसमें भी हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा मैं जो डीडीज बनाने में जो बर्ड शेयरी होता है, बेसिकली देखिए ना, अगर आप इसको करें पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक हो गया, जहाँ कहीं पे भी अगर आपने बर्ड शेयरी बनाना है, जहाँ लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इनलार्ज है, दैट इज बर्ड शेयरी। दैट इज द पोस्ट हेपेटिक कॉजेज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें जो साइनस, इसके क्या उनको कहते हैं, साइनस फिनोसिस होते हैं, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या ये बर्ड शेयरी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, इसके जो डीडीज बनाने होते हैं वो बेसिकली ये होता है, आपने 3 चीजें लेनी है। दिस इज हिपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली एंड एसाइटिस।
ठीक है। अगर आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो आपने इसको इस तरह से करना होता है, छोटा लिवर, बड़ी स्प्लीन और असाइटिस। जहाँ पे छोटा लिवर है, बड़ी स्प्लीन है और असाइटिस ज्यादा है, तो इसके डिफरेंशियल क्या होंगे? छोटा लिवर आ गया ना। अब मैं यस मैम। आपको पोर्टल हाइपरटेंशन की बता रही हूँ। पोर्टल हाइपरटेंशन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। बड़ी स्प्लीन, मैसिव एसाइटिस, छोटा लिवर, ये हिपैटिक कॉज है या पोस्ट हिपैटिक है या प्री हिपैटिक है? मैम ये हेपेटिक है। दिस इज प्री हिपैटिक। जहाँ पे प्री हेपेटिक। बड़ी स्प्लीन आ रही है ना, ठीक है, और मैसिव एसाइटिस आ रहा है, ये आपकी प्री हिपैटिक की कॉज होती है। क्यों? प्री हिपैटिक में जो पोर्टल वेन होती है, जो स्प्लैनिक वेन होती है, वहां पे एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, और स्प्लीन इसके अंदर बड़ी होती है। अब ये छोटे लीवर का मतलब है जब आपका क्रोनिक लीवर डिजीज ज्यादा शॉर्ट हो जाता है ना, फिर आपको ऊपर नोड्यूलर फॉर्मेशन या जो इसकी सरफेस है वो रफ मिलती है। जहाँ पे सरफेस रफ मिल रही होती है वो क्रोनिक लीवर डिजीज के साइन होते हैं। उसमें छोटा लीवर एंड छोटी स्प्लीन, स्प्लीन में नॉट बी पैल्पेबल। क्या कभी क्रोनिक लीवर डिजीज में आपने स्प्लीन देखी है मैसिवली एनलार्ज? यस मैम। मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन देखी है? मैसिवली नहीं देखी। हाँ, स्प्लीन नहीं होती ना, और उसमें असाइटिस होता है, वो भी मैसिव हो सकता है, लेकिन लिवर छोटा, स्प्लीन छोटी और असाइटिस ज्यादा प्लस जॉन्डिस, दिस इज क्रोनिक लिवर डिजीज आर हिपैटिक कॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। अच्छा। अब अगर हम पोस्ट हिपैटिक की बात करें, यस असाइटिस दैट इज इन मैसिव असाइटिस, spleen is not palpable, left lobe of the liver is palpable, this is post hepatic cause of portal hypertension। मैम फिर इसमें राइट लोब प्रेजेंट नहीं होगा? नहीं, राइट लोब होगा, लेकिन राइट लोब तो होता ही है ना। जिसमें लेफ्ट लोब पैल्पेबल हो जाए वो पार्ट शेयरी है, वो पोस्ट हेपेटिक कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है। ठीक है। अच्छा। उसमें स्प्लीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, होगी भी तो बिल्कुल जस्ट पैल्पेबल होगी, असाइटिस होगा। ठीक है। तो ये यस मैम। फीचर्स देखते हैं जब भी आप एब्डोमेन को एग्जामिन करें, आपको कोई शॉर्ट केस भी आता है, आपने हमेशा ये डिसाइड करना है, बड़ा स्प्लीन, बड़ा लिवर, बड़ा असाइटिस, इन तीनों की बेसिस के ऊपर मैंने अपना डिफरेंशियल बनाना है। आसानी ये है, जहाँ स्प्लीन बड़ी है, जॉन्डिस नहीं है, ये प्री हेपेटिक कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन है। अगर हम मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन हेमेटोमेसिस के साथ कोई पेशेंट आए ना, अदरवाइज तो वो आपके हेमोलिसिस भी हो सकते हैं। जहाँ पे क्या है, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर इनलार्ज है, असाइटिस है, दिस इज टर्शियरी पोस्ट हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। जहाँ पे छोटा स्प्लीन है, छोटा लिवर है, स्प्लीन नहीं है, छोटा लिवर है और असाइटिस मैसिव है एंड जॉन्डिस है, दिस इज द हेपेटिक कॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, और मोस्ट लाइकली दिस इज अ केस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। ओके। ठीक हो गया। तो इसमें हमेशा कॉज को फाइंड आउट करते रहना है। छोटा बच्चा होगा तो आपने मेटाबॉलिक कॉजेज, जैसे आपके माइंड में हेटेरोस्क्लेरोसिस है, इलेक्ट्रोसीमिया है, और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसमें आई मीन वहां पे टॉर्च इन्फेक्शन, इन्फेक्शन टॉप पे होंगे, यहाँ पे होंगे तो आपके जो दूसरे हैं लाइक हेपेटाइटिस बी सी वो टॉप पे होंगे। चाहे उसने मुझे बता दिया कि सारा कुछ नहीं है, बट इन माई डिफरेंशियल आई शुड कीप दिस ऑन द टॉप, दे आर मोर कॉमन। ओके। ठीक है। चलिए ठीक और हो। मैम अगर मीन्स ना कोई बच्चा ऐसा है, लाइक वो हमें ना इसको ना मीन्स ना टिंच ऑफ जॉन्डिस है आईज में, और उसको ना ग्रॉस साइड से, और उसकी ना लिवर और स्प्लीन जो है वो एक जितनी है, मीन्स लाइक 5 सेंटीमीटर स्प्लीन थी और 5 सेंटीमीटर लिवर था, और हम्म उसकी ना एब्डोमेन भी डिस्टेंडेड थी और वेन्स भी प्रोमिनेंट थी, और हम्म बच्ची जो थी वो 5 इयर्स की थी। तो अभी हम्म हमारे पास शॉर्ट केस मिल रहा था हमें, तो हम इसमें हम्म मीन्स ना डिफरेंशियल अगर बना रहे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे कि मीन्स ना टॉप पे हम क्रॉनिक लिवर डिजीज रखेंगे, सेकंड पे हम क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया रखेंगे, और थर्ड पे वेरी हम गुड। कोई भी इंफेक्शन रखेंगे। इन्फेक्शन फिर भी टॉप पे आते हैं। फिर मैम क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन, डिजीज में हम इंफेक्शन टॉप पे रखेंगे ना? हाँ, आप इसको क्रोनिक लिवर डिजीज बनाएंगे, उसकी कॉजेज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, क्रोनिक हेमोलिसिस में यूजली यूजली लिवर इज नॉट एनलार्ज्ड, उसमें अच्छा। स्प्लीन एनलार्ज होती है ना। अगर आपको इसमें आप क्रोनिक हेमोलिसिस तब रखेंगे जब लिवर आपका पैल्पेबल नहीं है बट स्प्लीन इज पैल्पेबल। ठीक है। जब अच्छा। स्प्लीन यस। पैल्पेबल है, जॉन्डिस है,
तो फिर मेरा हेमोलिसिस आएगा। ये आपका पेशेंट जो है वो लिवर की डिरेंजमेंट वाला आएगा, CLD आएगा, उसमें मैंने उसकी कॉजेज को इन्फेक्शन आ गया, उनको टॉप पे रखना है। हेपेटाइटिस बी, सी, एज के अकॉर्डिंगली विल्सन है, ये जो भी है, या ड्रग इंड्यूस हो सकता है या ऑटोइम्यून हो सकता है। ये मेरे अगर आपसे एग्जामिनर कहता है एनीथिंग एल्स देन यू मे कीप दिस क्रोनिक हेमोलिसिस, वो भी फिर भी थोड़ा लेस लाइकली है। क्यों? उसमें लिवर इतना 5 सेंटीमीटर लार्ज नहीं होता, फिर भी उसके अंदर इनका हो सकता है ये आपका ब्रूसेलोसिस का केस हो सकता है ये आपका क्रोनिक मलेरिया का केस हो, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली के साथ आ गया, जॉन्डिस के साथ आ गया। ठीक है, हो सकता है ये आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस हो, लिवर भी है, स्प्लीन भी है, जॉन्डिस भी हो गया है। इसमें आपके हार्ट की ऑस्कल्टेशन और उसको यस और नो करना जरूरी है। फिर मैम इसमें एब्डोमिनल टीबी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पहले आप लिवर की कॉजेज को, CLD की कॉजेज को, इफ एग्जामिनर से एनीथिंग एल्स, फिर इसमें क्रोनिक मलेरिया, इसमें डिससेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, वो चीजें आएंगी, ब्रूसिलोसिस आएगा। अच्छा ठीक है मैम। और एक बात, लाइक ना, जैसे विल्सन वाला एक बच्चा था, तो विल्सन वाला भी मीन्स दोनों ही एक ही पेशेंट में मीन्स ना दो फेनोमेना मीन्स दो डायग्नोसिस पॉसिबल है। लाइक बच्चे को जो हिस्ट्री थी वो ऐसी थी कि मीन्स ना वो कह रहे थे कि उसको पाइका की हिस्ट्री है मीन्स ना फ्रॉम दी चाइल्डहुड। अभी वो जो हमें हमारे पास प्रेजेंट कर रहा था वो उसको एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द पाइका रहता रहता था, उन्होंने डीवॉर्म वगैरह नहीं किया था कुछ भी। बट अभी जो हमारे पास आया था वो आया था कि बच्चा पेल हो गया था, और ना हमने जब CBC करवाई तो बच्चे की ना HP काफी डिक्रीज थी और हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा दिया। देन विद इन मीन्स ना 2 days ना बच्चे की ना हालत खराब हो गई और बच्चा जो है ना पेरिटोनाइटिस उसने डेवलप की और तो एब्डोमिनल जी मैम। ट्रांसमिट ठीक थी, क्रॉस मैच ठीक था, ये भी तो हो यस मैम। सकता है इसको एक्यूट वो हिमोलिटिक रिएक्शन हो गया। अच्छा तो फिर उसने ना 2 days में ना इनकेस डेवलप किया, इनकेस नहीं बट मीन्स वो कह रहे थे कि कॉन्स्टिपेटेड बच्चा रहा और फिर एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया और ना बच्चों ना वोमिट भी कर रहा था। तो ये कह रहे थे सब मीन्स ना वहां पे डिस्कशन हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मीन्स उसकी जब अब भी मीन्स ना सारा कुछ वर्कअप हुआ है तो वो फाइंड आउट टू बी दी विल्सन। तो इसमें ना ये कह रहे थे कि हमें जो केस लेके जाना है तो वो इन द मीन्स ना क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया को ना सारा रूल आउट करना है। नहीं, इस तरह के केस नहीं, अब ये डिपेंड करता है कि देखिए ये आर्ट होता है ना हिस्ट्री लेने का, जो एक परफेक्ट हिस्ट्री होती है ना वो बेसिकली एक्सप्लोर करती है। अभी अभी जो आपने चीज बताई हो सकता है उसको ब्लड रिएक्शन हुआ, लेकिन अगर ये विल्सन डिजीज रूल आउट हुआ तो इसकी हिस्ट्री डेफिनेटली पहले की होगी। इसको जब से कॉन्स्टिपेशन है ना वो उसको हेपेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी होगी जो अनडायग्नोस्ड रही है। ठीक है, ठीक है। चलो। वैसे फिर हमें इसमें ना जो हीमोलिटिक काजेज होंगे सारे ही लाइक ना मींस विल्सन हो रहा है या फिर मींस ना हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस या फिर मलेरिया वगैरह, सिकिल, थैलेसीमिया, ये सारे रूल आउट करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल करने पड़ेंगे। इसके लिए ना आप मेरे पास कुछ नोट्स हैं, बेसिकली उसमें आपने ये अप्रोच नहीं करनी कि क्या है क्या नहीं है ना, आप उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर सादा सी अप्रोच है, लिवर बड़ा है, स्प्लीन बड़ी है, दोनों बड़े हैं, एसाइटिस है या नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड करना एंड व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये जी बल्कि मैम, अभी थैंक मेरे पास है, मैं आपको ये सेंड करती हूँ ताकि मैं यू। फिर इसको भूल ना जाऊँ। ठीक है, चलो ठीक हो गया। आपने यस बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट केसेस के आप डॉक्टर चंदा भाई आप सर भी ना शॉर्ट केसेस की एक एक वीडियो बना के सेंड करें, जिससे लास्ट टाइम हम इनको डिस्कस करते थे, तो भी हम मैम। शॉर्ट केस भी किसी दिन जो है ना, एक तो लाइव क्लास होगी उसमें तो जा रहे, फिर आप लोग टोटल भी 4-5 हैं तो उनमें से कम लोग फिर ज्वाइन कर सकेंगे। आप तो वैसे भी लाड़काना से, तो आपके लिए तो मुश्किल होगा, तो आप ना यस मैम। शॉर्ट केसेस की वीडियो बना के ना मुझे सेंड करें, ताकि हम वहाँ पे डिस्प्ले करके फिर उसको प्रॉपरली शॉर्ट केस के फॉर्म में डिस्कस कर लिया करें कभी। ठीक है मैम। ठीक है, चलो ठीक हो, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग, अल्लाह हाफिज।